Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. In the name of Allah, who is most merciful, most beneficent. So today we are going to start about 9th English, lesson number 17, unit 7. You have to open page 77. The topic was Sultan Ahmad Masjid, and we are going to solve the exercise of this unit. So, and our today's exercise is vocabulary D. You have to open your books, page 77. The thing that we have going to do today is abbreviation. Here is a word, abbreviation. So the question is that what is abbreviation? Abbreviate. Word abbreviate का मतलब होता है to short something. किसी चीज़ को छोटा कर देना, कम कर देना. Clear? So now today we are going to talk about abbreviations. ये होते क्या हैं abbreviations? Look at this. An abbreviation is a shortened form of word or a phrase used in place of the whole word or phrase. He is basically saying that कि abbreviation जो है एक word की जो है ना वो short form होती है. Clear? या तो वो एक word की short form होगी या फिर एक पूरे phrase की short form होगी. किस लिए यूज़ होता है? Used to save space and time. Clear? जिस वक्त स्पीच हो तो उसमें या फिर लिखा जा रहा हो तो बार बार रेपिटेशन से बचने के लिए we have to use it. When you look at the example, you may understand what abbreviation is. Like this, most common example of our country nowadays, NAB. आपने सबने नाम सुना होगा. So this is also an abbreviation, NAB, and it stands for National Accountability Bureau. Clear? ये इसकी full form है. तो इसकी full form को जो short form में बनाया तो वो बना दिया NAB. So we are having a lot of abbreviations that we use in our daily routine and in our newspapers, our journals and magazines, books. So that's why now today we are going to discuss about these abbreviations. Some prominent and famous abbreviations are these. What do the following abbreviations stand for? Now you have to tell us कि ये abbreviation किस लिए use होती है. So the first abbreviation is USA. But before going to start this thing, I have to tell you something more, that कि the one is abbreviation and second one is acronym. For example, here is a word USA और पिछले पेज पे था NAB, जिसको मैंने क्या पढ़ा? NAB, not NAB, और इसको मैंने पढ़ा USA, not USA. Clear? So this is difference between abbreviation and acronym. Acronym में ये होता है कि जब आप वर्ड को अलग अलग से प्रोनाउंस करते हैं, हर लेटर को अलग नाम देकर, जैसे इसको अभी नाम दे रहे हैं आप USA, और नैब को आपने एक वर्ड पूरा पढ़ा है, नैब बना दिए उसको. सो दैट्स वाई नैब, द वर्ड नैब इज़ कॉल्ड एब्रीवेशन. ठीक है, कि उसको वन वर्ड बना दिया हमने लेटर्स को जो है ना वो जोड़कर. एंड नाउ दिस इज़ एक्रोनिम एंड इट इज़ स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्लियर? ये इसकी फुल फॉर्म है. नेक्स्ट UK, यूनाइटेड किंगडम. क्लियर? ऊपर वाला बरतानिया के, ऊपर वाला अमेरिका के लिए यूज़ होता है और नीचे वाला इंग्लैंड के लिए, बरतानिया के लिए. नेक्स्ट UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये अरब अमारात के लिए यूज़ होता है. क्लियर? फुल फॉर्म जो है इसकी ये है. थर्ड ICU, इट इज़ अवेलेबल इन ऑल सिटीज़, ऑल हॉस्पिटल्स. हर हॉस्पिटल में एक ICU होता है. क्लियर? इट स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट. MBBS, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर. व्हाट MBBS स्टैंड फॉर? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. क्लियर? So this is full form of MBBS. PhD, you have listened a lot of time, PhD. So what is PhD?
Doctor of Philosophy. They have taken PH from philosophy and D from doctor. MPhil, Master of Philosophy. PAF, Pakistan Air Force. Next, few more. What do the following abbreviations stand for? NADRA. Yes. Do you know something about NADRA? Yes. National Advanced Database and Registration Authority. NADRA. Clear? And this is also an abbreviation, not acronym, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड या डाटा जो है वो सेव होता है. UN, United Nations. ISSB, Inter-Service Selection Board. WAPDA, you know very well. Water and Power Development Authority. PTB, now this is an acronym. PTB, Punjab Textbook Board. MNA, yes, you know very well. MNA, इलेक्शन के दिनों में तो खूब अच्छी तरह इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हाट इज़ MNA? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. MPA, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, सूबाई सतह पर जो असेंबली में मेंबर होते हैं. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्लियर? नेक्स्ट, few more. What do the following abbreviations stand for? WHO, World Health Organization. Clear? And this is very famous in these days, in the days of pandemic corona, COVID-19. WTO, World Trade Organization. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. And UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. So these are abbreviations. You have to learn them and memorize the full form of these abbreviations. And you know the difference between abbreviation and acronym as well. The thing that you have to do is learn and write abbreviations on your notebook and learn them by heart. This is all about today's lecture. See you in the next video. Thank you so much.